Assalamualaikum, welcome back to my channel. In today video we will talk about limiting reactant. Limiting reactant क्या होता है? The reactant which is 100% consumed during a chemical reaction or the reactant which is consumed earlier during a chemical reaction. लिमिटिंग रिएक्टेंट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज करें आप एक पेंसिल एक रबर पर स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और आपके पास 3 पेंसिल और 4 रबर हैं, तो आप कितने स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 3 स्टूडेंट में पेंसिल 100% कंज्यूम हो रही हैं, सो पेंसिल आर लिमिटिंग रिएक्टेंट। 4 रबर आपके पास थे, 3 रबर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एक रबर आपके पास बचा, सो रबर आर एक्सेस रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। मीन लिमिटिंग रिएक्टेंट the reactant that consumed earlier during the reaction. After that stop the reaction, no further product is formed. So limiting reactant limit the amount of product. Excess reactant the reactant that left over after the chemical reaction. There is no use of excess reactant in the chemical reaction. Now how to find limiting reactant in the chemical reaction? Firstly, you have to write the number of mole of reactant and product. Second, write their stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient क्या होते हैं? The number of mole of reactant and product in the balanced chemical reaction. स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखने के लिए सबसे पहले आपने बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है। नाउ हियर आर एग्जांपल ऑफ अमोनिया सिंथेसिस, जिसमें स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, अमोनिया NH3 2 है। थर्ड, divide the mole to stoichiometric coefficient. Fourth, the reactant which has minimum of this ratio mole to stoichiometric coefficient is limiting reactant. Question: 5 mole of A react with 2 mole of B. Calculate the number of mole of C. Here a balanced chemical reaction. Firstly, write the number of mole. A के number of mole 5, B के 2. Second, write their stoichiometric coefficient. A का stoichiometric coefficient 2, B का 1. Third, divide mole to stoichiometric coefficient. For A 5 divided by 2, for B 2 divided by 1. The ratio of mole to stoichiometric coefficient for B is minimum, so B is limiting reactant and A is excess reactant. Now to find the number of mole of C, we all know limiting reactant decide the number of mole of product. लिमिटिंग रिएक्टेंट B है, डिवाइड मोल टू स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर B 2 डिवाइडेड बाय 1. फॉर C number of mole of C divided by 2. After cross multiplication number of mole of C is equal to 4. Next question: 56 gram of nitrogen react with 30 gram of hydrogen to form ammonia. Find the limiting reactant, excess reactant, number of mole of ammonia formed and the amount left over. Here a balanced chemical reaction of ammonia synthesis. Mass of nitrogen and hydrogen question में given है, इनके नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हैं। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन 56 ग्राम, mass of nitrogen divided by 28
molecular mass of nitrogen is equal to 2 number of mole of hydrogen. 30 gram mass of hydrogen divided by 2 molecular mass of hydrogen is equal to 15. To find limiting reactant and excess reactant, firstly write the number of mole. नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल 2, हाइड्रोजन के 15. सेकंड राइट देयर स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट. Stoichiometric coefficient of nitrogen is 1, for hydrogen is 3. Third, divide mole to stoichiometric coefficient. For nitrogen 2 divided by 1, for hydrogen 15 divided by 3. The ratio of mole to stoichiometric coefficient for nitrogen is minimum. So nitrogen is limiting reactant and hydrogen is excess reactant. Now to find the number of mole of ammonia form, we all know limiting reactant decide the number of mole of product. लिमिटिंग रिएक्टेंट नाइट्रोजन है, डिवाइड मोल टू स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट. फॉर नाइट्रोजन 2 divided by 1. For ammonia, number of mole of ammonia divided by 2. After cross multiplication, number of mole of ammonia is equal to 4. Next, to find the number of mole of excess reactant use, we all know लिमिटिंग रिएक्टेंट नाइट्रोजन है, एक्सेस रिएक्टेंट हाइड्रोजन है. नेक्स्ट, डिवाइड मोल टू स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट. फॉर नाइट्रोजन 2 divided by 1. फॉर हाइड्रोजन number of mole of hydrogen divided by 3. After cross multiplication, number of mole of hydrogen that use in the chemical reaction is equal to 6. Next, to find the number of mole of excess reactant left over, 15 number of mole of hydrogen that we taken in the chemical reaction minus 6 number of mole of hydrogen that use in the chemical reaction. 15 minus 6 is equal to 9 mole. 9 mole of hydrogen that left over after the chemical reaction. If you like the video, hit the like and subscribe bell icon and write your questions in the comment section.